डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, फाउंडर बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन भारतीय छात्र संसद के मंच से तालियों के साथ करेंगे। हमारे साथ वयोवृद्ध नेता सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर मोहन धारिया साहब, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर पी कालीराज, वाइस चांसलर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम स्वागत करते हैं। धीरज सिंह, प्रोग्रामिंग कंसल्टेंट लोकसभा टीवी, उनका स्वागत। विश्वनाथ कराड़ जी, MIT के संस्थापक, और राहुल कराड़ जी, हमारे चीफ कन्वीनर भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन के संस्थापक। आप सभी मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन। प्रोफेसर डॉक्टर पी कालीराज, वाइस चांसलर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच पर। Respected eminent speaker Dr. Mohammad Yunus, the Nobel laureate, founder, Bangladesh Gramin Bank, and other dignitaries on the dais, and distinguished invitees, and my dear students, friends. It's great pleasure for me, and I thank the organizers to give the opportunity to me to give the opening remark for this important session, Poverty, a Great Terror. At the outset, I should congratulate the organizers for choosing such a thought-provoking topic. At a time when we are often hearing about terrorism and its adverse effects on community living, it is essential and priority that we look at the root causes, deliberate and finding lasting solutions. In this regard, poverty is to be viewed very seriously as the symptoms of its effects are felt in large scale across the globe. Basically, human beings are social and live in well-defined groups. Social hierarchy is therefore natural, and it is the order of the system. Similarly, in a materialistic world, material possession is a sign of sustenance, security, strength, and control over the groups and sections, and this brings about a socio-economic order. It is in this struggle that a divide between have and have not materializes. Poverty is therefore a state in which the survival and security are directly threatened due to deprivation of material possession. In abject poverty, even the basic needs of the life, namely food, clothing, and shelter, are deprived, leading to life-threatening solutions. Now, we have this eminent speaker, Dr. Mohammad Yunus, who is going to talk much about that and is going to give a lot of knowledge to our student friends regarding the poverty, whether it is a great terror. I request all the students and the delegates are getting benefited by this. Thank you very much. स्टूडेंट लीडर माला हमारे साथ हैं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई है, बीकॉम की स्टूडेंट हैं। हम उन्हें इनवाइट करेंगे और आज के विषय पर अपने विचार रखने के लिए। स्टूडेंट लीडर माला हमारे साथ हैं, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई है, बीकॉम की स्टूडेंट हैं। हम उन्हें इनवाइट करेंगे और आज के विषय पर अपने विचार रखने के लिए। नमस्कार, मेरे व्याख्यान का विषय है गरीबी आतंकवादी को जन्म देती है। आप जाके किसी आतंकवादी से सवाल करेंगे कि वो आतंकवादी क्यों बना, तो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे शौक था आतंकवादी बनने का, मेरी इच्छा थी, मुझे खुशी मिलती है लोगों को मार के। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा मेरी मजबूरी थी, और वो मजबूरी है गरीबी। सिर्फ एक ही कारण होता है गरीबी, जिसकी वजह से लोग, भूख लगने में तो जानवर भी अपना बच्चा खा जाता है, तो इंसान। मैं आपको प्रथम
गरीब शब्द का अर्थ बताती हूँ। ग से गंदगी और गलियां, र से रुसवाहट और रोना, और ब से बेकारी और लाचारी। इस शब्द का अर्थ है गरीब। हमारे देश में 20% लोग हैं जिनके पास 80% पैसा है, और 80% लोग हैं जिनके पास 20% पैसा है, और 20% लोग ऐसे हैं जो कि भूमिहीन हैं, और 35% लोग हैं जो अल्प भूधारक हैं। और हमारे देश की सरकार की एक खासियत है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम रुपयों में बढ़ाकर जब कम करने का टाइम आता है तो पैसों में करती है। 5 रुपए से बढ़ा के 75 पैसे कम करती है। लेकिन हम हर बात के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसमें हमारी और आपकी भी कुछ गलतियां हैं। मैंने 6 जनवरी 2013 का न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके अंदर एक आर्टिकल था कि एक ठेकेदार है, उन्होंने पंढरपुर के एक मंदिर में 1500 करोड़ रुपए दान किए। कारण यह था कि उनका 9000 करोड़ का बिल सरकार के पास फंसा हुआ था, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर उनका यह बिल पास हो जाएगा तो वह उसका एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाएंगे। अरे मैं कहती हूँ, अगर उसका वो एक हिस्सा गरीबों में बांट देते तो लोग उन्हें कितनी दुआ देते। एक गरीब अपनी उसका जो समय होता है वो क्या सोचकर अपनाता है, इसके ऊपर मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ, गौर से सुनिए। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ है, अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ है, तो खुदा इंसान को कभी दुआ मांगना न सिखाता। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही अच्छा एक सुविचार हम लोगों तक पहुंचाया है, सुनिएगा। You cannot change your future, you cannot change your future, but change your habit, and surely your habit will change your future. बहुत बहुत शुक्रिया माला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन विचारों को हमने सुना। और मैं राहुल जी से जाते जाते मैं आप युवाओं के लिए कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जहाँ पे दूरियां पनपे वहाँ पे, जहाँ पे दूरियां पनपे वहाँ पे पास लिख देना, जहाँ पे दम निकलता हो वहाँ पे सांस लिख देना। तुम ही उम्मीद इस भारत देश की है, तुमसे इंतजार इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, नया इतिहास लिख देना। शुक्रिया। और अब हम चाहेंगे माला को सम्मानित करेंगे यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से। राहुल जी से निवेदन करूंगी, तालियों के साथ हम माला का यहाँ अभिनंदन करेंगे। स्टूडेंट लीडर शुभम डासे जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, एमबीए के छात्र हैं। शुभम आइए और अपनी बात रखिए। प्रणाम। उस गरीब का जो आज भी किसी सरकारी अस्पताल में अपने इलाज का इंतजार कर रहा है। प्रणाम उस निर्धन छात्र का जो यहाँ कहीं बैठा है, जो पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है। और प्रणाम उस 5 वर्षीय कुपोषित भारत का, उस कुपोषित भारत के भविष्य का, जो इस देश का नागरिक बनने के पहले ही कुपोषण का शिकार हो गया है। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि गरीबी क्या है। आज जाने गरीबी होती क्या है। यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा कहती है कि गरीब वो है जिसकी रोज की आमदनी 25 रुपए से कम की है। हमारा प्लानिंग कमीशन कहता है कि गरीब वो है जिसकी रोज की खुराक 2400 कैलोरी से कम है। लेकिन युवा साथियों, अगर गरीबी को जानना ही है, गरीबी को पहचानना ही है, तो एक पूरा दिन 25 रुपए पर निकाल कर देखिए, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि पॉवर्टी इज अ पनिशमेंट ऑफ अ क्राइम विच द पुअर डिड नॉट कमिट। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस आजाद भारत के 33% से भी ज्यादा जिले नक्सलवाद की चपेट में हैं। क्यों? क्योंकि उन 33% जिलों में उन अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा गरीबी है।
मतलब साफ है, नक्सलवाद को खत्म करना है तो निर्धनता को खत्म कीजिए, गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज है, मेगा सिटीज है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज भी हमारे यहाँ धारावी जैसे एशिया के सबसे बड़े स्लम्स भी है, जो हमें यही याद दिलाते हैं कि एक बार इस गरीबी को खत्म कर दो, स्लम्स अपने आप मिट जाएंगे। दोस्तों आजकल गरीबी के नए नए भयंकर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आज इस देश में गरीबी इतनी बढ़ गई है कि आज एक गरीब आदमी गरीबी के कारण अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आप ये इलीगल ह्यूमन ऑर्गन का मार्केट देखेंगे, 4,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। दोस्तों टुडे पुअर वुमेन फ्रॉम द पुअर फैमिलीज आर बीइंग बॉट to the brothels of the cities. This is nothing but the worst consequence of poverty called human trafficking. समय का मैं थोड़ा जल्दी करना चाहूंगा। दोस्तों आज एक डॉक्टर कहता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण है, एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या इन्फेंट मोर्टेलिटी है, और एक पुलिस वाला कहता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्राइम है, नक्सलवाद है। लेकिन दोस्तों एक गरीब कहता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, क्योंकि एक बार आप गरीबी को हटा दो, न कुपोषण रहेगा, न कुपोषण रहेगा और न क्राइम रहेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी भारत सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। जैसा हमने कहा कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे नेता है, बहुत ही अच्छे नेता है जो गरीबों को मुफ्त में बिजली, मुफ्त में सड़क, मुफ्त में पानी, मुफ्त में घर, जाने क्या क्या दे देते हैं। लेकिन आज भी जीडीपी भी का हमारा 2% जीडीपी इन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स में लगाई जाती है। क्यों? मैम 2 मिनट चाहूंगा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि आज कक्षा 3री में पढ़ा था कि इफ यू गिव अ मैन ए फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, इफ यू टीच हिम टू फिश यू फीड हिम फॉर हिज लाइफ टाइम। दोस्तों आज मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को केवल एक ही बात कहना, अच्छा अभी आजकल एक नई बात सुनने में आई है कि अभी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है सीधे अकाउंट में पैसा। अरे ट्रांसफर करना ही है तो उस स्किल्स को ट्रांसफर कीजिए, उस नॉलेज को ट्रांसफर कीजिए, और फिर देखिए गरीबी कहां पहुंच जाएगी। सारी उम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करते रहा। साला काश उस गरीबी को पहले पहचाना होता तो आज उस चाइना की जगह मेरा भारत खड़ा होता। दोस्तों एमबीए का स्टूडेंट हूं। अगर आप देखो इस भारत के 40 करोड़ लोगों में से अगर भारत सरकार केवल 30% लोगों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार देने में सफल हो जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में इतना परिवर्तन आ जाएगा जब इस भारत का गरीब जो आज बिना रेल टिकट के यात्रा करता है खुद अपने टिकट से ऑनलाइन टिकट बुक कराएगा। धन्यवाद, जय हिंद। शुभम का हम यहाँ पर स्वागत सत्कार करेंगे। राहुल जी उनको अभिनंदन करेंगे यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से। मित्रों आज हमारे लिए एक बड़ा खास मौका है। विवेकानंद जी की 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। युवाओं का यहाँ पर समागम है और हम आपको बताएं कि यहाँ से इसी मंच से हम विजिगीषु अवार्ड्स की शुरुआत भी कर रहे हैं। विजिगीषु का मतलब होता है वो लोग जो हमेशा हर हालत में विजय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे युवा छात्र राजनीति में आए और इसी मकसद से देश के विभिन्न जो राजनीतिक छात्र संघ हैं उनके पदाधिकारियों को आज हम यहाँ विशेष तौर पर सम्मानित करेंगे। विजिगीषु अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे। मित्रों ये ऐतिहासिक मौका है, ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जबकि विभिन्न छात्र संघों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई है। मैं चाहती हूँ तालियों से हम इस बात का स्वागत करें कि हमारे साथ विभिन्न छात्र संघों के स्टूडेंट विंग्स के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं जिनको आज हम पुरस्कृत करेंगे। सबसे पहले आइए उस पर आधारित ये छोटी सी फिल्म देख लें।
Aditya Thackeray, the son of Uddhav Thackeray, Executive President of the Shiv Sena and grandson of late Barasaheb Thackeray, is currently the head of Yuva Sena, the youth wing of Shiv Sena. Good education and employment are his agendas for the youth. Sri Gerald C. Tennyson is an advocate in the Chennai High Court. He is an energetic youth wing leader who has led several camps for the welfare of the economically underprivileged and socially backward student community and the general public at large. Versatile, active and prominent youth leader Shri Manish Bajpai joined the Nationalist Congress Party in the year 2000 and is now its president. He is the president of the Organization of Orphan Children, Bal Aksha, and the Organization for Senior Citizens, Basera. The dynamic Manish Bajpai has participated actively in the National Service Scheme and conducted many camps related to the National Cadet Corps. He is also a nominated member of the Food Corporation of India, Chhattisgarh, since the year 2006. Self-motivated, confident youth leader, Dr. Pratyush Nandan is the national president of Chhatra Janata Dal, the student wing of Janata Dal United. Youth empowerment and students' overall development supporter, Dr. Nandan is into providing platforms for the students to explore their talents and grow. Dr. Rajpal Kashyap is an honored gold medalist for good educational behavior and fine social working in the university. He is also the winner of first position in National Internal University Youth Parliament competition organized by the Ministry of Parliamentary Affairs. He has participated in Andolan, conferences and training sessions from time to time on the call of the Samajwadi Party. Along with that, he is actively involved in organizing blood donation camps, women empowerment conferences, equal education conferences and Chhatra awareness program. Shri Rohit Chaudhary is the present National President of the National Students' Union of India, NSUI, the student wing of Indian National Congress formed on 9th April 1971. He was the moving force behind the massive student rally held in Chandigarh. He is continuously into the enhancement of youth manpower and encouraging the capable student leaders from the colleges. Resourceful, innovative and flexible, Swadesh Kumar is a graduate from Patna Law College. He has been the president of various youth wings since 1996, namely Samajwadi Chhatra Sabha, Patna University, Bihar Vikas Party Chhatra State President, Bihar, and presently is Chhatra Rashtriya Janata Dal State President, Bihar. Umesh Dutt Sharma, an Indian student leader and activist from Kangra district, Himachal Pradesh, is the National General Secretary of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. Till date, he has held various responsibilities like Vibhag Organizing Secretary, State Secretary of Himachal Pradesh, and presently is holding responsibility as the National Secretary since 2009. He has successfully led many national and state level agitations against commercialization and corruption. Educated, foresighted and concerned, youth leader Dr. V. Shivdasan is a Marxist by political view. He is the national president of the Students' Federation of India and former chairman of Kannur University Union. He has edited several books and articles.
a postgraduate engineer, dumped a successful career in the US to work on rural development projects back home. He is the passionate and innovative student wing leader, Balasaheb S. Tarade. He has been honored with the Outstanding Engineering Student Award by IEEE USA for 2004. He was also awarded the Certificate of Participation by NASA for the Mars Rover and Deep Impact Mission. He has published 10 papers in IEEE, international conferences, and participated in more than 30 conferences in India and USA. We are proud to confer on all these energetic and innovative young leaders of India the Vijigishu Chhatra Sangh Netritwa Puraskar. विजिगिशु पुरस्कार से सम्मानित करेंगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। यहाँ पर आदित्य ठाकरे जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रमुख युवा सेना शिवसेना के तालियों की गड़गड़ाहट से इस युवा का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन और ये पुरस्कार। ये पहला मौका है दोस्तों जबकि इस तरह का कोई आयोजन एक ही मंच पर अलग अलग विचारों पार्टियों के हमारे होनहार युवा जिन्हें इस मौके पर सम्मानित किया जा रहा है, राजनीति में सक्रिय युवा। नमस्कार राहुल जी, पहिलं प्रथम धन्यवाद, कारण हा अवॉर्ड जो आहे मी समजतो की हा अवॉर्ड माझ्यासाठी नाही आहे, पण माझ्यासोबत जे काम करतात सगळीकडे त्या मुलांसाठी, त्या मुलामुलींसाठी आहे. कारण ती मुलं मुली जर माझ्याकडे आलीच नाहीत कामं घेऊन किंवा कामं करायला, तर मी स्वतः काय आहे, मी काहीच नाही आहे. आणि म्हणून मी स्वतःला नेता वगैरे मैं कुछ समझता नहीं हूँ अपने आप को. जो मेरे नेते हैं, ये सब लोग बैठे हैं, वो मेरे नेते हैं. I am truly very excited to be here because what I see here is not just students. मला काही इथे विद्यार्थी नाही दिसत आहेत. मला इथे तरुण चेहरे दिसत आहेत ज्यांना स्वप्न आहेत आणि ज्यांची पेटलेली मशाली आहेत पोटात. I see here people with dreams fueled with passion. I think that is very important. Today we are talking of politics. Most of us abuse politics. I say let's not abuse politics, let's use politics for the better society. That is very important. To most of us out here, I was just meeting some of y'all and y'all were telling me, we learn in a school of government. And I said to them, within a year, y'all should keep the school behind, as in not you behind, but the word school behind, and y'all should come into government. तुम्ही स्वतः सरकारमध्ये बसला पाहिजेत. ही तुमची ताकद असली पाहिजे. आणि आजकाल राहुलजी एक नवीन ट्रेंड चालू झालेला आहे, रिॲक्शनरी पॉलिटिक्स. म्हणजे कुठचाही विषय झाला की त्याला पहिलं रिॲक्शन द्यायला सगळे टी व्हीवर जातात. करप्शन झालं त्याला रिॲक्शन द्यायला, रेप झालं त्याला रिॲक्शन द्यायला. ॲक्शन पॉलिटिक्स कुठे आहे हे बघणं महत्त्वाचं आहे. मी स्वतःहून करप्शन थांबवतोय का तुम्हाला माहिती आहे की नाही मला माहीत नाही, पण आम्हाला युवा सेनानी आम्ही वुमन हेल्पलाईन चालू केली पूर्ण महाराष्ट्रात. 24 hours women helpline, safety helpline, and that is going very successfully. Similarly, when there was a drought in Maharashtra last year, the Yuva Sena, without any government help, and I'm not saying to give a competition to government, I would like cooperation from the government, though it's my opposition, but without government help, we helped 75 villages come out of drought. I think that is the credit of the youth today. And before I conclude, just to drive a point, and normally this is a young voice, again this is not a politician speaking or this is not any party speaking, but Yunus sir, I am a big admirer of yours, and I hope that you will bring your work into our country and help the rural poor, help the city poor. But again, going beyond borders, we stand here as two countries, India and Bangladesh, and I hope you take this message to the government of Bangladesh, because
We want to develop friendly relations. हमें दोनों को अच्छा काम करना है आगे देश लेके. लेकिन I feel it is my duty as a young person here to tell you the public voice of the people in my city, in my country. And I hope we both can come together and solve it. There is public anger and resentment against the illegal immigration from Bangladesh. In Mumbai, the riots that happened on 11th August, or the suffering of my Assamese brothers and sisters, I hope we can try to solve that together. And all these youth leaders will stand here, secure our borders, secure our country, and bring forth a motto of saying, let's talk development, not politics. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra, Vande Mataram. Thank you very much, Aditya. Gerald C. Tennyson, Joint Secretary, Student Wing TMK, विजय केशु अवार्ड से सम्मानित करने के लिए Good afternoon to everybody. I hail from Tamil Nadu, the DMK party, which the party was started as a social movement and a student movement for the upliftment of the lower and downtrodden society. As a student wing state joint secretary, it gives me immense pleasure to see you all here. Politics has been an inspiration from our leaders, Dr. Kalaignar and Dr. M.K. Stalin, our deputy secretary. As a student wing leader, I invite you all to politics, not to gain anything for you and your family, but to serve the people. Thank you. Thank you very much. मनीष वाजपेयी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनसीपी पार्टी से आते हैं. तब जाकर कुछ बात बनेगी जनहित की. जय महाराष्ट्र आणि जय हिंद. साथियों, आज हम सब यहाँ पे हैं. ये एक समागम है. जैसे देश में संत समागम होता है, वैसे ये युवा और छात्र समागम है. और ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि आज मैं एक ऐसी साथियों की इतनी बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहा हूं, जिसमें आने वाले समय में कोई भगत सिंह निकलेगा, कोई पंडित नेहरू निकलेगा, कोई इंदिरा गांधी निकलेंगी, कोई अटल बिहारी वाजपेयी निकलेंगे, जो इस देश को एक नई दिशा और दशा देंगे. समय कम है, सिर्फ 2 पंक्तियों में और 2 लाइनों के साथ आपसे मैं बात अपनी समाप्त करूंगा. एक घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई. 23 साल की एक युवती का बलात्कार हुआ. सारे देश में आक्रोश हुआ. सारी राजनीतिक पार्टियों को परे हटाकर देश की जनता ने आक्रोश व्यक्त किया. जो दबा था अंदर, वो ज्वालामुखी निकला. और उस ज्वालामुखी में 100% में से 90% योगदान हमारे युवाओं का था, हमारे छात्रों का था. इसका क्रेडिट, इसका श्रेय, अगर आज उन सारे आरोपियों को सजा होती है, उनकी जो स्थिति है वो जेल में है, इसका सारा श्रेय युवाओं और छात्रों को जाता है. मैं उम्मीद करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आइए आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपने आप को सम्मिलित करिए और इस देश को एक नई दिशा दीजिए. जय हिंद, जय भारत. डॉक्टर प्रत्यूष नंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र जनता दल जेडीयू पार्टी से. तालियों से हम स्वागत करेंगे. कार्यक्रम के आयोजनकर्ता करात साहब, मंच पर उपस्थित मोहम्मद यूनुस साहब, स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती के अवसर पर हमें आपने आमंत्रित किया
इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश का यह एक यूनिक आयोजन है, छात्र संसद। पूरे देश में कोई भी संगठन ऐसा आयोजन नहीं करता है। तो मैं 2 सुझाव यहाँ देना चाहूँगा जिसका इस संसद में चर्चा होना चाहिए। पहला सुझाव यह है कि आज देश में 30 करोड़ से ज़्यादा छात्र युवा जो 30 साल के नीचे हैं और उनमें से मात्र 6.5 करोड़ लोग ही या तो कोई काम करते हैं या कहीं पढ़ते हैं। 23 करोड़ लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। जवान आबादी, यंग फोर्स अगर हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा तो कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता। वो काम के तलाश में हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं और किसी भी राजनीतिक दल के पास इस के लिए कोई विजन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। यह एक बहुत ही आज के लोकतंत्र का एक चुनौती भरा सवाल है। दूसरा सवाल, जो दूसरा उदाहरण जो आज यहाँ चर्चा होना चाहिए यूथ के बीच में, कि आज आम आदमी के बीच से जो यूथ नेतृत्व निकलना चाहिए वो पूरी तरह से बंद है। आज सभी राजनीतिक दल में जो आम आदमी के बीच से यूथ को सिपाही के रूप में भर्ती किया जाता है, सेनापति के रूप में नहीं। इसलिए इसकी भी चर्चा आज यूथ पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इन 2 संक्षिप्त सुझावों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। मैं पटना से आता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडीज़ में एमफिल कर रहा हूं। पीएचडी मैंने पटना से की है, लॉ भी की है। इसलिए मैं छात्रों के बीच में 15 वर्षों से काम कर रहा हूं और आपने मुझे आमंत्रित किया, पहली बार, आगे भी करेंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आया कल ही आप उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बन गए हैं। बहुत बहुत मुबारक और स्वागत। आज हम उन्हें विजिगिषु छात्र संघ नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। आप यूं ही राजनीति में आपके कदम आगे बढ़ें। नौजवान साथियों, मैं पहले तो बधाई देता हूं भारतीय छात्र संसद आयोजकों को, राहुल जी को। नौजवान साथी हैं, निश्चित तौर पे नौजवानों को इस लड़ाई में जिस तरीके से सीमा पे नौजवान लड़ता है तब देश सुरक्षित होता है, और देश की समस्याओं से जब नौजवान लड़ेगा तभी देश में समस्याएं समाधान हो सकती हैं। साथियों, आपने देखा जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आताताई सरकार आई थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे नौजवानों ने किया और पूर्ण बहुमत की प्रचंड सरकार समाजवादी पार्टी की बनी। और जीता जागता उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौजवान विधायक पहली बार जीत कर आए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की टीम में सबसे ज़्यादा नौजवान जीत कर आए हैं। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रेरणा है। और ये देश गांधी का देश है, डॉक्टर लोहिया का देश है, शिवाजी का देश है, ये देश विवेकानंद जी का है। इसलिए साथियों, नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से आप सब लोगों को बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रणाम करता हूं। और आप सब लोगों ने जो सम्मान दिया उसको मैं धन्यवाद देता हूं। और साथियों, आपको बताना चाहते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश आधा हिंदुस्तान है और उस आधे हिंदुस्तान में जिस तरीके से नौजवानों को गरीबी, पॉवर्टी पे चर्चा करनी थी, मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में जितनी योजनाएं, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ी गरीबी है बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगार लोग हैं इसलिए गरीब हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं बधाई देता हूं। साथियों, आप लोगों से अपील करता हूं कि राजनीति में आओ, और राजनीति की सबसे बड़ी ताकत राजनीति में है, सबसे बड़ी ताकत सरकार में होती है। नौजवानों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर रोहित चौधरी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष NSUI कांग्रेस। सबसे पहले मैं सम्मानित मंच और यहाँ पर सभी मेरे मौजूद दोस्तों, सबसे पहले तो बताऊं कि मैं एक गांव से आता हूं, साधारण परिवार से, नॉन पॉलिटिकल फैमिली का लड़का हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज मुझे गर्व है कि गांव से निकल के मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, वो भी एक छात्र संगठन का, वो भी कांग्रेस पार्टी का। तो मैं ये समझता हूं कि इस पंडाल में बैठा हुआ हर एक शख्स अगर ठान ले तो वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्लियामेंट और मंत्री बन सकता है। दोस्तों, 5 साल पहले जब राहुल गांधी जी ने हमारे संगठन की जिम्मेदारी ली तो उन्होंने हमसे सबसे पहले आते यही पूछा कि भैया संगठन में कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर जी और नदीम जी जो कल आए थे, उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे 21 लाख मेंबर हैं, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे 50 लाख मेंबर हैं। तो राहुल जी ने कहा कि उनका डाटा दीजिए, तो कोई भी हमारे पास डाटा नहीं होता था। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब हमारे संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है पूरे हिंदुस्तान में जिसके पास पूरा डाटा है, हमारा कौन कौन मेंबर है, कौन काम करता है, काम के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस होता है। दोस्तों, हमारे मंच के दोनों तरफ, एक तरफ महात्मा गांधी जी और विवेकानंद जी हैं और एक तरफ बुद्धा जी है, और हमारे देश में तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां और तमाम तरह की विचारधाराएं आपको मिलेंगी। मैंने आपको न्योता दिया है, राजनीति जीवन में आने से पहले आप सबको ये सोचना चाहिए कि किस विचारधारा और किस सोच के साथ हम पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हैं। और एक शेर के साथ मैं ये बात बताना चाहता हूं कि क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे। दोस्तों, देश को बांट के कोई भी देश की तरक्की नहीं कर सकता, ये हम और आपको समझना होगा। आजकल सोशल मीडिया और सोशल आंदोलन काफी चल रहे हैं, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी, बुद्धा जी और विवेकानंद जी की मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया है कि इनकी जीवनी हम और आपको सबको पढ़नी चाहिए। किस प्रकार से ये लोग इस देश को गुलामी से निकाल के आज़ादी के तौर पे लेके आए हैं, उसी अहिंसा के तौर पे हम और आपको लड़ाई लड़नी है और इस देश को और इस नौजवानों को एक नया रास्ता दिखाने हैं। और एक सलाह मैं और अपने करार भाई को देना चाहता हूं कि हम सब नेताओं को जो इन्होंने एक ये सम्मानित किया उसके लिए धन्यवाद। और जो ये चेक हम सबको दे रहे हैं, तो मैं अपने सब साथियों से आग्रह करूंगा कि ये सब चेक हम वापस राहुल भाई को दें, और महाराष्ट्र के जो भी गरीब और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में हमारे दोस्त आते हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए एक वापस हम अपने राहुल भाई को देते हैं, उनकी शिक्षा में ये काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वदेश कुमार जी, राज्य अध्यक्ष छात्र सभा राष्ट्रीय जनता दल, इस नौजवान का स्वागत करेंगे। आज इन्हें विजिगीषु छात्र संघ नेतृत्व पुरस्कार भारतीय छात्र संसद के मंच से मिल रहा है। युवा भारत के प्रतिबिंब, देश के कोने कोने से आए छात्र युवा नेता, सम्मानित अतिथि, आयोजक MIT SOG, हम सभी यहाँ जमा हैं इस देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। हमारा लोकतंत्र आज संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, इसलिए आज बड़ी जिम्मेवारी है हम छात्र नौजवानों पर कि इस लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें, कैसे शुद्धिकरण करें। आज आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र पर से उठता जा रहा है। बाजारवाद ने हमारे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्य का क्षरण किया है, और आज इस समागम में हम निश्चित रूप से सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक रूप से मजबूत होकर जाएंगे। और ये राजनीति का जो क्षरण हो रहा है, लोकतंत्र की आत्मा, संसद पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसे बचाने के लिए हम युवाओं को संकल्पित होना होगा कि हम राजनीति को कैरियर के रूप में लें और लोकसभा में युवाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए छात्र संघ के स्तर से युवाओं को आगे आना होगा, और इसके लिए मैं इस मंच से गुजारिश करूंगा कि पूरे देश स्तर पर
छात्र संघ चुनाव आयोग का गठन हो, ताकि छात्र जो राजनीति में सीधे प्रवेश करे, जो विश्वविद्यालय राजनीति का नर्सरी हो, उसे कोई रोक नहीं सके और आगे यह लोकतंत्र मजबूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ छत्रपति शिवाजी की धरती पर आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद। बीजी किशु छात्र संघ नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नेशनल जनरल सेक्रेटरी ABVP उमेश दत्त शर्मा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2-3 नारों को इस देश में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ज्ञानशील एकता इस देश के छात्र में हो, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति बने, स्टूडेंट पावर नेशन पावर बने और आज का छात्र आज का नागरिक की भूमिका में रहे। देश का छात्र जिसके बारे में जिसको सिखाया जाता है कि तू अगले कल के तुम नागरिक हो, अगले आने वाले समय में तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। विद्यार्थी परिषद का ये स्पष्ट मत है और इसको स्थापित करने में हम पूरे देश में विद्यार्थी परिषद लगी है कि इस देश का छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। मित्रों, यहाँ जो सब लोग यहाँ छात्र बैठे हैं, आप सब लोगों को और यहाँ उपस्थित 99% लोगों को इस देश में अगले 50 सालों तक रहना है और ये देश अगले 50 सालों तक हमारे रहने लायक करप्शन फ्री भारत हो, गरीबी फ्री भारत हो, इस देश में शिक्षा सबको सुलभ हो, इस देश में छात्र आगे बढ़े, इसके लिए लगातार संघर्ष करने की जरूरत है। और आज जो देश में वातावरण है, जो करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चली है, चाहे वो वुमेन सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो दिल्ली के साथ पूरे देश में मूवमेंट हुई है, आज इस देश का छात्र उठ खड़ा हुआ है और जो राहुल जी ने प्रयास शुरू किया है, उस राहुल जी के प्रयास के साथ साथ इस देश के हर फील्ड में, इस देश समाज के हर क्षेत्र में लीडरशिप की जरूरत है। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ देश समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में छात्र लीडरशिप दे और उसी का प्रयास जो राहुल जी ने शुरू किया है, उसको एक बार सैल्यूट करते हुए आगे आने वाले समय में ये प्रयास इस देश की सड़कों से होता हुआ देश की संसद तक पहुंचेगा, यही आशा आप सब लोगों के बीच में आज रखता हूं। धन्यवाद। शिवदासन जी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया CPIM पार्टी से आते हैं, बीजी किशु छात्र संघ नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं वी शिवदासन। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कर कमलों द्वारा हमारा बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ मंच पर। Dear friends, here I am very happy because last December 14th I was participating in a seminar in Karnataka in Bangalore. In that time students discussed the issues of student community issues. December 13, Karnataka Legislative Assembly passed 13 education bill without proper discussion. Without proper discussion, Karnataka Legislative Assembly passed 13 education bill. But very next day, they seriously discussed another bill, that is cow protection bill. The Legislative Assembly members given lot of suggestions to the cow protection bill. Somebody says bull also include in this cow protection bill. Cow is the holy animal, and bull is the vehicle of God Shiva. That is whatever in near future, I think they will introduce another bill, the rat protection bill. Rat is the vehicle of God Ganapati. So they are discussing the God and the vehicle of God. But here, this seminar, this student parliament, we are discussing the issues of the student community and related to the issues of the human being. So I am very happy because of this discussion. So here in Maharashtra, here we are seeing the two Indias. One is shining India and second one is the suffering India, IPL India and BPL India. Here Maharashtra is the center of these two Indias. One of the richest person in Maharashtra, he given aeroplane as a birthday gift to his
wife. So, at the same time, thousands of peasants committed to suicide because of their financial debt. Here, the student community and the youth community, their duty to fight against these unethical policies of the government. I salute you all for our organization. Salute you, everybody. आप जानते हैं बाला साहेब का एक संबंध रहा है नासा के साथ में, जिस तरह के उनके कार्य रहे हैं और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुएंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। First of all, I thank MIT, Indian Student Parliament, Mr. Rahul Karadji, for inviting me here on the very auspicious occasion of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. Arise, awaken, and do not stop until you achieve your goal. मैं एक विदर्भ के छोटे से गांव से हूँ। बचपन में मैं पेड़ के नीचे पढ़ा, बाद में इंडिया में पढ़ा, यूएस में पढ़ा। बट आप सबके दिल में जो एक चाह है कि अपने देश के लिए कुछ तो करना है। Right now in country we are seeing this anger that we want to do something. मेरे भी दिल में ऐसा था। I was fortunate to work with NASA, Dr. Kalam ji and President Obama too. But एक बचपन से अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ तो करने की एक चाह थी। और आज मेरा परिचय राजनेता के रूप में दिया है, मगर मैं खुद को एक क्रांतिकारी बोलता हूं। आज जब मैं यूएस से इंडिया में आया तब दो चीजें थी, रूरल डेवलपमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट। These were the two things highly discussed in European Parliament, youth parliaments. युवकों के माध्यम से गांव में how we can do rural development. But जब देखा that time there were a lot of anti-corruption movements in the country. तब मैंने एक महसूस किया, आज भारत में समाज सेवकों से ज्यादा क्रांतिकारियों की जरूरत है. And we need a political revolution too. When I started election, my slogan was न जात न पात न पक्ष, ग्राम परिवर्तन एक ही लक्ष्य, आता बदल निश्चित. I believe in ideologies more than idols right now because a lot of how things happening in the country. So my message for the youth, I am standing here in front of you to give this message that democracy is still alive. There are good people. We need alternatives. People right now situation, people do not have faith in any of the party, people, current politicians. We need, at the same time, we need good people in all the parties, and that you can do as an independent too. If I can do, being from a small village, then definitely, I strongly believe, all of you, we all can change this country. So, be the change you want to see in the society. Thank you very much, MIT. हमारे भारतीय छात्र संसद के मंच से कई इनोवेटिव आइडियाज़ का जन्म हुआ है। राहुल जी ने कई ऐसी इनोवेटिव चीज़ें शुरू की हैं जो प्रतीकों के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में बसी रहेंगी। और ऐसी एक परंपरा की शुरुआत हमने की थी। लोकतंत्र की शपथ हम लोग लिया करते हैं भारतीय छात्र संघ के इस मंच से, और मैं अब निवेदन करूंगी राहुल जी से कि आज एक बार फिर से हम सब मिलकर लोकतंत्र की शपथ लेंगे भारतीय छात्र संसद के इस मंच से। I request my dear student leaders, you must have observed that in the history of India, for the first time, 10 political parties, student wing heads have come on one platform. We must give a big hand to all of them. And I must say this on this very platform with full conscience that their seniors, all the party president heads of all these political parties, sometime in the future, we all want to see one such gathering for the nation building process of all the political party presidents, the national presidents I'm talking about. Thank you. I request every one of you to just raise your hand like this, and I'm going to request all the student wing heads to give the oath to each one of you for strengthening our democracy. So that is the whole concept, and I request each one of you, all the only student leaders I want from the political parties, they have to be here and they have to give the oath. Thank you so much. I also request, if I don't know, everybody, Anna ji can definitely sit. Thank you so much. नाही तिथंच आणणं भाऊ, तिथंच नाही, तिथंच गरज नाही अण्णांची.
I think we all can raise a hand. We, the student leaders of India, assembled here in the third Bharatiya Chhatra Sansad, hereby pledge to participate in constructive political process at different levels. As a conscious youth and responsible citizen of India, it is my duty to uphold its democratic traditions and values. I affirm my lifelong commitment to fight against all types of social and economic justice. I will never compromise the integrity of my nation and strive to promote the national spirit. Jai Hind. प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब के हम सब उनके नाम को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, जिन्होंने हमें ये सिखलाया है कि गरीबों को गरीबी से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है। अपना पूरा जीवन उन्होंने इसके लिए समर्पित किया है। नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब हमारे साथ हैं, हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर ये फिल्म देख लें। Nobel Peace Prize laureate Professor Muhammad Yunus is a Bangladeshi banker and economist who developed the concepts of microcredit and microfinance. Bank also, because not only I was given the Nobel Peace Prize, also Grameen Bank was given Nobel Peace Prize. For us, it's important because we succeeded in creating an institution in Bangladesh, which is not very easy country to build an institution. And at that time, I was trying to explain to him the importance of microcredit in the USA. And he knew all about microcredit beforehand. And I was suggesting that maybe we should start a microcredit program in this country to create a kind of a prototype which can be developed and expanded later on. And he was gave all the support. He said, go right ahead and we'll have any support you need from us, we'll give it to you. And I was talking about giving us a legal home so that we can use that legal home to create that organization, because for microcredit it's very important that we have the legal facility to take deposits. If we can take deposits, then it becomes easy to lend money because you don't have to go out to raise funds for that. Professor Yunus was chosen by the Wharton School of Business for PBS documentary as one of the 25 most influential business persons of the past 25 years. In 2006, Time magazine listed him under 60 years of Asian heroes as one of the top 12 business leaders. In 2008, in an open online poll, Muhammad Yunus was voted the second topmost intellectual person in the world on the list of top 100 public intellectuals by Prospect Magazine, UK, and Foreign Policy, United States. It is an honor to welcome the Messiah of microcredit, Dr. Muhammad Yunus, to the third Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you. Thank you very much. I bring greetings from Bangladesh, and particularly from the youth of Bangladesh. I was sitting here since morning with great admiration. I'm very impressed by the way the whole thing has been organized to bring the young people of India together, particularly young people who are leading the students' unions.
filling those leadership positions in those institutions in one place. And look at India and its future through the political window. And I feel very jealous. I feel jealous that as a youth, I never had a chance like this. I'm jealous because you're so lucky to have a conference like this and the organizers who are behind it, who could come up with the idea to let you speak out, let you find your way, no matter what political philosophy you participate. You can interact, you can look at each other's eyes and prepare yourself for future. While the youth of India is getting together, visioning the future of India, it can be also an inclusive exercise, not just an exclusive exercise for India. Because India is not an isolated country. India is a leader of the world. A leader of the world cannot just talk about themselves and not worry about the world. India's position has to be assessed in the context of the global framework. Indian youth is a part of, not only part, a very important part of the global youth. You are global youth. Don't forget that. If you forget that, you'll be undermining yourself. If you're 25% of the population of the world, you are more than 25% of the youth of the world. World does what you do. Once you set the tone for the world, that gives you the space, what you do for India. And that should be within a framework consistent with each other. So if you don't look at the broader framework, we may not see the proper picture. I wish today, such a beautiful conference, there are youth representatives coming from Bangladesh to attend with you, from Pakistan, from Nepal, from all SAARC countries. That you have a SAARC framework. What is SAARC? After all, we are neighbors to each other. We are a product of the same historical process. You cannot have an isolated politics, ignoring what the politics is around. So you need a framework, a SAARC framework of politics. Then it becomes something positive, something future-looking. Otherwise, there may be a lot of mismatch unnecessarily. Why don't take care of the possibility of those mismatches ahead of time so that we skip all those things right when we are emerging as we move forward. And today's subject here is poverty, very rightly so, because this is the region, the SAARC region, is the hub of poverty for the whole world. You cannot have politics, you cannot have anything without bringing at the top position in front of us about poverty. It's about life of people. Why should anybody be a poor person? Just because historically we have inherited it doesn't mean we have to carry it on. And when we talk about poverty, my experience in poverty
was somewhat a accidental way of confronting it. Not that I was not involved in poverty, but the way I reacted in a certain circumstances was quite accidental. I had no idea what can be done with poverty. You want to be an economist, you become an economist. And I did. And I thought I have learned enough to understand what poverty is all about. But then in Bangladesh, when I came back to my country in 72, after the liberation war, I saw a completely different country that I never believed it could be as bad as that. We soon had a famine in the country. In 1974, if you remember, Bangladesh had a terrible famine. People dying on the street, people dying on the villages. Not because of any disease, not because of any disaster, like cyclone or flood, because people didn't have enough to eat. And you cannot feel it from a description what it means unless you are there with them, how slowly a person dies minute by minute, moving towards death because didn't have just a little bit to eat. And you see it every day. So that's when I thought all those education that I had, and you're all students of different educational institutions, and I understand what a pride we take in our educational institution and how much arrogance we get from our educational background. Once you confront the situation of extreme poverty under the circumstances of famine, hunger, all your arrogance starts melting away because you see how useless that knowledge is in the face of the people who are dying. So I realized that all my understanding of economics and whatever I have learned in textbooks and classrooms is totally useless. And I decided that forget about it. This is not going to help me. What I decided, I thought, why don't I just go ahead and be with these dying people, hungry people, and see as a human being if I can be of some use to at least one person. I know I cannot solve the problem of the world or solve the problem of many, but as a human being, I have the capacity to solve the problem of one person. Nobody can take it away from me. I didn't know what I could do, but I thought I could do something. And that's what I started doing. So I put my mission, my ambition, my entire being to see if there is some worth in me of being useful to another human being, even for a day. And I started doing that. Luckily, the university, what I was teaching in, Chittagong University, is located right among villages. So what I could do, I could just walk out of the campus boundary and be in the village and see today if I can be of some help to somebody. And that led to many tiny, tiny little things. And I started feeling a little better that, okay, I'm doing something. Then I saw the loan sharking in the village and the ugly face of loan sharking by lending tiny little money and take control of people's lives and squeeze them every blood of their body, even when they are extremely poor. They didn't let them go. So what can I do as an individual person? It's such a complicated problem. Loan sharking is all over the world for centuries. Suddenly it came to my mind, I cannot solve the world's problem, but I can certainly solve the problem of this village next to my university for a few people in this village.
My question to myself is, why don't I lend the money to these people instead of let them go to the loan shark? I can solve this problem by lending money myself. So I'll give them more reasonable kind of loan rather than the extremely ugly terms that the loan sharks give. So I started giving loans out of my own pocket. Very simple thing. I didn't realize that this will grow into anything. I was just trying to solve the problem that I see, cut the link between the loan sharks and the people. And people got so excited about it. So I thought I'll link them with the bank, which is located in the campus. Instead of they going to the loan shark, they can go to the bank, bank can give the loan. Bank said, no, no way, bank cannot lend money. My struggle began. I thought they were absolutely unreasonable. I thought banks should be lending money to the poor people. And I started making accusations against them by saying them, you are a very strange organization. You create a bank to lend money to people, and you do it in a funny way. You lend money to people who already have money, and you refuse to lend money to people who don't have money. I thought logic should guide you the other way. You should be lending money to people who don't have the money. That should be the first priority. That's not how banks do. So I didn't give up my struggle. For months I tried to convince the banks. They didn't agree. So I had to find my solution. So I said, okay, why don't I become your guarantor? I sign every single piece of paper and take all the risk, and you give the money to the people that I select for you. It was a tough time. Finally, banks agreed to accept me as a guarantor. That's how it all began. I was the guarantor, signing every piece of paper and giving money to the people in the village. And it worked. And that's what became Grameen Bank. So when you hear about microcredit, when you hear about microfinance, you write your book, you write your dissertation, you think it's a very complicated thing. That's not how it appeared to me. People ask me, what is the best thing happened to you to create Grameen Bank? I said, the best thing that happened to me to create Grameen Bank was I did not know anything about banking. If I knew about banking, I would be very cautious. I will not do the kind of things I did. So I'm very lucky that I didn't know anything about banking. So I could dare into doing things which was not dared before. So if you feel, as young people, if you feel that, oh, I don't know these things, maybe I should not get involved with it because I don't know, I have not studied these things. Not knowing something is not always negative. It may be a blessing. Maybe your mind has not been already polluted by those knowledges. Quote unquote knowledge. Because if you got into all the existing way of doing things, you will never do the things new one. To create new, you have to have a blank mind so that you can start something fresh, which nobody ever did before. If your mind says this is the right thing to do, go ahead and do it. Don't worry about what the book says. Don't worry about what others say. You feel right and you proceed, you continue. That's the way to do it. You see, the world will not be guided by what is already known, because then you are stuck with the world. Old ideas, old institutions, old thinking. World will move forward in a high speed because somebody came up with a bright new idea which never thought before. And you could be the one. And in order to think about a new idea, you don't have to be pundit on the old ideas. The only thing you have to do, you have to be a creative person. And that's what you are.
young means a creative person. Use your creative power, don't give it up. Now people ask me why there is so much poverty. I said, I've been with the poor people for a long, long time now. And I have come to this conclusion way back. Whenever people ask me why people are poor, I have my only one answer. Poverty is not created by poor people. It's not their fault. Poverty is created by the system that we built, policies that we pursue, institutions that we have created. They create poverty, not the poor people. Poor people are the victims. They are not the creator of poverty. Poverty is created somewhere else and imposed on these people, the innocent people called poor people. So they are the sufferers, they are not the creators. I give the analogy of a bonsai tree. You take the best seed of the tallest tree in the forest and put it in a flower pot and let it grow. The seed germinates, seed grows, and the tree grows only this much. It doesn't grow more than that. But the tree that I saw in the forest is meters high, but this is only inches high. And you wonder, what's wrong with this tree? Why doesn't it grow? It looks exactly like the other tree, but it doesn't grow. Is there something wrong with the seed? No, there is nothing wrong with the seed. Simply, we didn't give enough space. We gave only a flower pot. So the tree got only this big. I said the poor people are bonsai people. There's nothing wrong with their seed. Simply society that we all built does not give them the space. If the society had given the space, they would be as tall as anybody else. If the society has given them the space, they'll be as top scientists as anybody you saw, not the street beggar. Today, he or she is a street beggar because nobody gave him a chance. He could have been the greatest political leader. She could have been the greatest academic researcher or whatever, given an opportunity. Within Grameen Bank, we give a student loan to the children of Grameen families. The parents are totally illiterate. So we thought we'll make a brick that second generation within Grameen family will never remain illiterate. There are 8.5 million borrowers of Grameen Bank in Bangladesh. So we took all the children of these 8.5 million families into the school. And they continued in school, didn't drop out. We made sure they didn't drop out. Then gave them education loans from Grameen Bank so that you can continue as far as you can go. So thousands and thousands of students at medical schools, engineering schools, universities. So you have a new second generation within these families. Parents are totally literate. Children are highly educated. You look at the mother, you can look at the daughter. Mother is totally illiterate. Daughter is a medical doctor. And you kind of come with the question or an idea that her mother could have been a doctor too. There's nothing wrong with her mother. But she's an illiterate person. Is it her fault? No. She's as good as her daughter. But nobody gave her a chance to go to school. So she remained an illiterate person. So the poverty is not in the person. So we have to redesign every institution we got. It's not just keeping the institutions float, continue. You have to redesign. Like, for example, banking system has to be redesigned completely. Today we have the financial crisis, we have the environmental crisis, we have this social crisis about poverty, ill health and everything. All because we made our framework wrong. That's the challenge. It's not about fighting about some past events or something. It's building a new future. And that's what the politics is all about. It's a visioning and creating. That's the challenge for the young people. Our framework is wrong. We call it capitalist system. And the capitalist system has created us into money chasers. All we do in our lifetime, chase money.
So, very passionately, we are chasing money. Money is our goal. Money is our passion. Money becomes a kind of addiction for us. There's nothing else. I said, that is something we have done damage to the whole world by creating that framework that we call capitalist system. Because human beings are not robots. Our life is not about chasing for money. Our life is a life of living as a human being. Our schools don't teach us what is being a human being. Our schools teach us what is chemistry and what is physics and what is history, but doesn't tell us what I should know about myself, who is me, what I'm here for, what is my mission, what is my purpose. There is no class like that. We create those classes ourselves as a young person. We have to find out who we are, what do we want to do, what kind of world we want to create. We can create our own world. That's what the young people are about. And you, the young people today, is the most powerful generation in the entire human history. Not because you're smart young people. You're as smart as any young generation anywhere in this history. But you are privileged having an exceptionally powerful technology at your command, which no other generation ever had. That makes you a completely different kind of human being. Your power is totally unlimited. Each human being, no matter where he or she lives, any time in history, has unlimited human capacity, unlimited creative capacity. But you have the chance, your generation have the chance to explore much more of your creative capacity than any generation ever had the opportunity. My question to you, if you have so much power at your disposal, what are you going to make use of this power for? That's the question you'll be asking yourself. We are not talking about the young people, all of you gathered together, collective force. Collective force is something else. I'm talking about you as an individual. You have the power to change the whole world. You can create the world you want. You look like just anybody else here. But inside, you are a Superman. You are a Superwoman. Since you didn't know about it, you behave just like everybody else. I'm reminding you that you are a superhuman being. Behave like a superhuman being. Don't address small things like petty things. Start small, of course, that's what I was telling you. I start small. But don't do it in small things. So do it in a big way. So what kind of framework we should have? I'm talking about a framework which we can be a human being. Selfishness and selflessness together. And I'm talking about creating a new kind of business, social business. Business to solve problem rather than make money for oneself. So that's the kind of business now is spreading. You can participate in that. You can create the whole of India, whole of the world. Not just India. India is your small piece for you. You are ready for the whole world. If you can do something in your state, in your district, that will change the whole world. That's the power today that you got. And you make use of it. We can create a world in your generation, in a few years' time, because the world is changing so fast. 20 years back, there's many of the things that we have today didn't exist. If anybody said everybody will have a cell phone in their pocket in 20 years from now, they will say, you're a crazy person. You don't understand the reality of life. Today, that's the reality of life. Everybody has a cell phone, whether rich, poor, urban, rural, man, woman, child, doesn't matter. Everybody has a phone. God knows 20 years from today what we will have in our pocket. We cannot even imagine. So the world is changing very fast. In that world, in the changing world, all the things which are impossible today becomes possible today, becomes routine tomorrow. And the distance between impossible and possible become smaller and smaller and smaller. It's shrinking. So if the impossibles become possible so quickly, why don't we go for all the wildest thing that we can think of as impossible things? And that's what we can do, not these little things. We can create a world where there's not a single person who will be a poor person. We have to believe in it. If you believe in it, it will happen.
because our mind will take us in that direction. And then we'll put poverty in the poverty museum, because there will be no poor person in the whole world. And that's the world we'll be proud of. That's the challenge that you have to take, and you are able to take. You are capable of doing that. Don't short-circuit yourself into little things. My job, my promotions, my little car, and all that. You are made to do big things and go for the big things, change the whole world. You don't look back for your older generation, previous generation. Previous generation comes from a primitive planet. They cannot guide you. You are in a completely new planet. You build your own planet the way you want. And that planet where not a single person will be a poor person, not a single person who will be called an unemployed person. Why should anybody be unemployed? Is there something wrong with me? Nothing. Then why am I unemployed? Because a stupid system couldn't find a space for me. That's what the unemployment is all about. Throw that system away. Don't work for that system. That system is made by some stupid people sometime best in the past. You create the system where in a natural way, everybody will be enjoying work, everybody will be doing things. Nobody will even understand the word, what is unemployment? Why one shouldn't be busy doing things and enjoy life? And that's what you can create. And go for it, make it happen. That's what the politics, that's what the life is all about. Thank you very much. वयोवृद्ध नेता सोशल एक्टिविस्ट वनराय के फाउंडर डॉक्टर मोहन धारिया साहब, उनका भी अभिनंदन। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आज के हमारे प्रमुख अतिथि जिन्होंने क्रेडिट माइक्रो क्रेडिट में पूरे दुनिया में रिवोल्यूशन की है, क्रांति की है, ये मोहम्मद यूनुस साहब, डॉक्टर कराड़, जिन्होंने ये सब पूरा छात्र परिषद ऑर्गेनाइज किया है, ये हमारे मित्र राहुल कराड़, मंच पर बैठे हुए सब मान्यवर और दोस्तों, मैं यहाँ आया हूँ डॉक्टर का एडवाइस छोड़ के आया हूँ। उन्होंने कहा कि आपको पूरी विश्रांति लेनी चाहिए। मैंने डॉक्टर को कहा कि पूरे दूर दराज से कोने कोने से ये छात्र लोग आए हैं, उनको प्रणाम करना मेरा कर्तव्य है। उनके साथ ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनको राहुल कराड़ को और उनको चेतना देने वाले प्रोफेसर वीडी कराड़ को भी प्रणाम करना चाहिए। उनके साथ आज मोहम्मद यूनुस साहब को तुमने सुना है, उन्होंने आपका संदेश दिया है और ये जरा ख्याल में रखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। स्वामी विवेकानंद की जयंती है, उस अवसर पर आपने कुछ प्रतिज्ञा दी है और उसके साथ ये जोड़ दीजिए कि हमारे देश में जो माताएं हैं, भगिनी हैं, वो हमारी माता और भगिनी हैं और उन पर किसी तरह का अत्याचार, बलात्कार और उनको टीजिंग का काम हम करेंगे नहीं। ये आपकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और नौजवान लोग अगर ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में यह अत्याचार बंद हो जाएंगे। दोस्तों, गरीबी के बारे में मैं इसको बोलूँगा नहीं, इतना ही कहूँगा कि हमारे देश की ताकत हमारे नौजवानों में है, हमारे देश की ताकत हमारे भूमि में है, पानी में है, हमारे जानवरों में है, वनस्पति में है, हमारे अलग अलग फॉरेस्ट में है, उसका अगर और ये हमारा एवर शाइनिंग सन है उसमें है, उसका अगर अच्छा इस्तेमाल हम करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का वापर करेंगे तो यहाँ गरीबी रहने का कोई कारण नहीं है। दुर्भाग्य से ये लीडरशिप कम पड़ रही है, हमारा नेचर कम नहीं पड़ा है,
हमारी लीडरशिप कम पड़ी है, इसीलिए ये भुगतना पड़ता है। ये कुछ भी हो, तुम निर्धार करो, वट एवर मे बी द सिचुएशन इन द कंट्री। हम सब नौजवान जो मतभेद है वो दूर रखेंगे, इकट्ठे आएंगे, एक नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय हो। पोडियम नंबर 1 से अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब के लिए रहमतुल्ला बतूर, जो कि अफगानिस्तान के इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, पोडियम नंबर 1 से मोहम्मद यूनुस साहब के लिए ये सवाल। पोडियम नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड पर रहमतुल्ला बतूर, पूछिए अपना सवाल। Thank you. Dear sir, I had the opportunity to read your book, one of your book. The name was The Social Business, and I was greatly inspired with that. So on the basis of that model that you had introduced with Grameen Bank and the dairy industry in Bangladesh, I would like to ask a question. To remove poverty based on the model that you had created in Bangladesh with Grameen Bank, how can we ensure the implementation and sustainability of this model in societies which suffer a politically and socially destabilized situation? Though poverty is the root for destabilization or instability of politics, but how can we adjust poverty and security? Thank you. Thank you. Thank you for your question. That's where the young people come about. You cannot go on this instability and chaos in our politics, in our thinking and so on, confusion. We have to clear it up. We have to get our task very clearly defined and get involved with it and made our institutions which work. As I said, the institutions are at fault. Policies are at fault. That's why there's a conference like this, who will be the future political leaders of the society, then figure out what is needed to be done. It's not just words, some kind of a campaign, demands and things, but you have to figure out what exactly needs to be done. So imagination is what you will be handling right now. Create those imaginations and create those structures. When given opportunity, you can address those issues very carefully. So yes, there are problems, but just because there are problems doesn't mean we have to sit tight with our folded hands. We get in there and get it solved. And that's what the energy of the youth, creative power of the youth is so important. थैंक यू सर। और अब नेक्स्ट सवाल पोडियम नंबर 6 से, राइट हैंड साइड से, पोडियम नंबर 6 हमारे साथ हैं बोर्नी बैनिक फ्रॉम त्रिपुरा। अपना सवाल पूछेंगे बोर्नी बैनिक, पोडियम नंबर 6 राइट हैंड साइड पर। নমস্কার স্যার, আমি আপনাকে আমার তরফ থেকে আর স্টুডেন্টস পার্লামেন্টের সব স্টুডেন্টস থেকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি ভারতে। I welcome you on behalf of all the students of Student Parliament in India. আমি বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষকে খুব ভালোবাসি, কারণ আমি আমার মাকে ভালোবাসি and our ma Bangladesh. I love Bangladesh and the citizens of Bangladesh because my mother is Bangladeshi. And my question is, the microcredit system in India is partly successful. So what steps could be taken to make it successful to eradicate the poverty fully? Thank you. তোমার কাছ থেকে কথা শুনে খুব আনন্দ লাগলো। তোমার মাকেও আমার সালাম দিও। আমি অনেক পড়াশোনা করেছি আপনার ব্যাপারে। অবশ্যই। এখন এখানে এসছো, তোমার চমৎকার ভবিষ্যৎ তৈরি হোক এই কামনা করছি। Yes, there are lots of things to be done. For example, we need a new banking law to create a different kind of bank, which is microcredit banks. Like today, I'm introduced as a banker to the poor. I said, how would you introduce the other bankers? You shouldn't be saying they're the banker to the rich and they work for the banks for the rich. So if there is a bank for the rich, there should be bank for the poor.
That's how the compensation can be made. Today, that bank doesn't exist. That's why all the people are left out from the banking system. So you need a legal framework. That's where the legislatures are for, and new regulatory framework. We cannot regulate microfinance by the regulations of the banks of the rich, because their rules and their needs are completely different than the need for the poor people's banks. So this is one thing that we'd be needing. And the policies, how to give opportunities. If the opportunities is what keeping the poor, how do you open up the opportunities? So that's a series of actions in the microcredit, particularly in that, so that we can build up savings, we can build up other financial services like insurance program, housing program, and many things which can be included in that financial system or financial service packages. A lot of steps to be taken. ধন্যবাদ তোমাকে এই প্রশ্নগুলো করার জন্য। Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Yunus. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. सवालों के जवाब देने के लिए आप अपना स्थान लें। बहुत शुक्रिया। Thank you. और अब भारतीय छात्र संसद के मंच से वक्त हुआ है रेजोल्यूशन का, एक प्रस्ताव का, और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ देवेंद्र पाय, जो आपको प्रस्ताव पढ़कर सुनाएंगे। We the student leaders assembled here in the 3rd Bharatiya Chhatra Sansad hereby appeal to the government to make provision for effective implementation of skill enhancement training programs for poor and underprivileged communities, which will create a quality human resource in the country. तृतीय भारतीय छात्र संसद में एकत्र हुए हम समस्त छात्र नेता सरकार से यह निवेदन करते हैं कि वह कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे, जिससे गरीब और जरूरतमंद समूहों को देश का बेहतर मानव संसाधन बनाया जा सके। ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए आप टाइप कीजिए BCS 8 स्पेस Y। इस रेजोल्यूशन का विरोध करने कीजिए टाइप BCS 8 स्पेस N एंड सेंड इट टू 9212148888 और आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने आज का प्रस्ताव सुन लिया, ये प्रस्ताव पर मत दीजिए। और जैसे कि यहाँ पर आज एक सदस्य ने कहा था कि कैश ट्रांसफर से अच्छा है कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे, सबको मौका दे बराबरी का, स्किल डेवलपमेंट का कोई ऐसा उपाय लाए जिससे लोग आगे बढ़ सकें। मैं समझती हूँ आज का जो हमारा ये प्रस्ताव है इसी मूल भावना पर आधारित है। और जैसे कि अभी डॉक्टर यूनुस भी बता रहे थे कि उस सिस्टम को हमें बदल देना चाहिए जो हमें अनएम्प्लॉयड रखता है, बेरोजगार रखता है। क्यों नहीं हम ऐसा स्किल डेवलपमेंट करते? और उसी की मूल भावना के अनुरूप ये आज का प्रस्ताव, हम चाहते हैं भारी मतों से हम इस प्रस्ताव को पारित करें। और जितने समय में ये मत इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आमंत्रित करूंगी धीरज सिंह को, जो कि लोकसभा टीवी के प्रोग्रामिंग कंसल्टेंट हैं, एक संदेश उनकी तरफ से। और जितने समय में ये मत इकट्ठे हो रहे हैं, मैं आमंत्रित करूंगी धीरज सिंह को, जो कि लोकसभा टीवी के प्रोग्रामिंग कंसल्टेंट हैं, एक संदेश उनकी तरफ से। धीरज सिंह, प्रोग्रामिंग कंसल्टेंट, लोकसभा टीवी, उनका भी हम यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं। Respected members of the dais and my dear friends at the 3rd Bharatiya Chhatra Sansad. Right at the outset, I'd like to apologize because my opening remark I've outsourced from China. In ancient China, there was a saying which was actually a curse. When they didn't like someone, they cursed someone, saying that may you live in interesting times. Now, why is this a curse? If we think about it, we realize that interesting times would be times in which your social structures are changing. A lot of received wisdom that you thought would guide you in your life, in your future, that is changing. Right now, today, we are living in times like these. These are interesting times because we have a lot of challenges in front of us. We have a lot of issues in front of us. But most of all,
We are living in times of unparalleled transparency. We are living in the age of information where a lot of tools are there before us where we can access information, we can find out knowledge through different sources, we can counter-check our sources, and we can arrive at our conclusions. These are very interesting times, and as young people in these times, it is very valuable for you all to use those tools very usefully in your life and future in politics to come. धीरज जी, अगर आप पीछे देखें हमारे, तो हमारा जो प्रस्ताव है हाँ। बहुत बड़े मतों से पास हो गया है। यहाँ पर 98.39% लोग ये मानते हैं कि इस देश को कौशल विकास की आवश्यकता है और हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। In Lok Sabha TV, our mandate is to bring the public closer to Parliament and vice versa, parliamentarians closer to the public, to take issues which are affecting the public at large, make them available to our members, to our honorable members, and to take their reactions to the public and see what differences, how best they can make lives better for everyone. जी, ये भी एक एज ऑफ इंफॉर्मेशन का ही कमाल है कि आपके मत, आपके व्यूज़ एकदम से हमारे सामने आ जाते हैं। एक प्रस्ताव पास होने में मिनट लगते हैं, और हो सकता है, हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में हमारा पार्लियामेंट भी इसी तरह से फंक्शन करेगा, जब एक बटन के दबाने से आपके व्यू, आपके प्रस्ताव पार्लियामेंटेरियंस के सामने आ सकें। एक एज ऑफ इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो उस एज की अपने एक नेचुरल चैलेंजेस होते हैं। शुरू में लगता है कि बहुत कठिनाइयों से घिरे हुए हम, समाज में बहुत गंदगी है, कहीं भी आशा की किरण नज़र नहीं आती। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, वहाँ पे आपको बुरी खबरें भी आएंगी और अच्छी खबरें भी आएंगी। लेकिन हमारा न्यूज़ रूम का जो एक पुराना पैराडाइम है, जिसको अभी तक कई लोग फॉलो करते हैं मीडिया में, जो कहता है बैड न्यूज़ इक्वल्स गुड न्यूज़। अगर ख़राब समाचार है तो वही हेडलाइन समाचार बनाता है, अच्छी खबरें जो है वो कहीं पीछे रह जाती हैं। ये पैराडाइम अब चेंज हो रहा है। एक सोशल मीडिया के आने से, जागरूकता के आने से लोग कनेक्टेड है। अगर एक कहीं घटना होती है तो उसके बारे में लोगों को फ़ौरन सोशल मीडिया के थ्रू खबर मिल जाती है। खबरों को जो आदान प्रदान है, पहले भी एक स्ट्रक्चर के थ्रू होता था। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आपको खबर देती थी, उस खबर को आपको रैटिफाई करने का, आपको चेक करने का कोई साधन नहीं था। आज आप एक प्रोटेस्ट रैली में जाते हैं, हाल ही में हमने दिल्ली में देखा, निर्भय को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, और उसमें कई यूथ लोगों ने, यंग लोगों ने भाग लिया था। इस तरह के प्रोटेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के समाज में, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि जो कनेक्टिविटी आई है इस एज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका फ़ायदा हमारे युवा पूरी तरह से उठा रहे हैं। जब एक मुद्दा जो उनको अफेक्ट करता है, एक बहुत गंभीर मुद्दा जो उनको अफेक्ट करता है, उसको लेकर वो फ़ौरन सड़कों पर आ सकते हैं। और ये इसका जो प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है युवाओं ने सरकार के सामने, सरकार को, और जो भी इच्छुक हैं लोग, नेता या राजनीति में आने के, उनको उसका मूल्यांकन करने की ज़रूरत है और उससे सीख लेने की ज़रूरत है। मैं अंत करूंगा क्योंकि समय का अभाव है, कि ये जो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे बहुत ही एक तरह से मंथन हो रहा है, चर्निंग हो रही है, और जब चर्निंग का समय आता है तो उससे कामधेनु जैसी गाय भी निकलती है और हलाहल जैसा विष भी निकलता है। और विष को हम ज़्यादा विष से प्रभावित ना हो, उससे ओवरवेल्म ना हो, पर ये याद रखें, something good is going to come out of this great journey. और इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। हम मोहम्मद यूनुस साहब का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। भारत के निवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।